An index is a statistical indicator that measures changes in the economy in general or specific areas. In case of financial markets, an index is a portfolio of securities that represent a particular market or a portion of a market. Each index has its own calculation methodology and usually is expressed in terms of a change from a base value. The base value might be as recent as the previous day or many years in the past. Thus, the percentage change is more important than the actual numeric value. Financial indices are created to measure price movement of stocks, bonds, T-bills and other type of financial securities. More specifically, a stock index is created to provide market participants with the information regarding the average share price movement in the market. Broad indices are expected to capture the overall behavior of equity market and need to represent the return obtained by typical portfolios in the country. Let's understand in Hindi. सूचकांक एक सांख्यिकीय संकेतक है जो सामान्य या विशिष्ट क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को मापता है। वित्तीय बाजारों के मामले में, सूचकांक प्रतिभूतियों का एक पोर्टफोलियो है जो किसी विशेष बाजार या बाजार के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक सूचकांक की अपनी गणना पद्धति होती है और आमतौर पर आधार मूल्य से परिवर्तन के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। बेस वैल्यू पिछले दिन जितना ताज़ा या कई साल पहले का हो सकता है। इस प्रकार, प्रतिशत परिवर्तन वास्तविक संख्यात्मक मान से अधिक महत्वपूर्ण है। स्टॉक, बॉन्ड, टी-बिल और अन्य प्रकार की वित्तीय प्रतिभूतियों के मूल्य आंदोलन को मापने के लिए वित्तीय सूचकांक बनाए जाते हैं। अधिक विशेष रूप से, बाजार सहभागियों को बाजार में औसत शेयर मूल्य आंदोलन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक स्टॉक इंडेक्स बनाया जाता है। व्यापक सूचकांकों से इक्विटी बाजार के समग्र व्यवहार को पकड़ने की उम्मीद की जाती है और देश में विशिष्ट पोर्टफोलियो द्वारा प्राप्त रिटर्न का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता होती है। Significance of the stock index. Stock index is an indicator of the performance of the overall market or a particular sector. It serves as a benchmark for portfolio performance. Managed portfolios belonging either to individual or mutual funds use the stock index as a measure for valuation of their performance. It is used an underlying for in financial application of derivatives. Various products in OTC and exchange traded market are based on indices as the underlying asset. Let's understand in Hindi. 2.2 स्टॉक इंडेक्स का महत्व। एक स्टॉक इंडेक्स समग्र बाजार या किसी विशेष क्षेत्र के प्रदर्शन का एक संकेतक है। ये पोर्टफोलियो प्रदर्शन के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। प्रबंधित पोर्टफोलियो, चाहे व्यक्तियों या म्यूचुअल फंड से संबंधित हों, स्टॉक इंडेक्स का उपयोग स्टॉक इंडेक्स के रूप में करते हैं। उनके प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए उपाय। इसका उपयोग डेरिवेटिव के वित्तीय अनुप्रयोग के लिए एक अंतर्निहित के रूप में किया जाता है। ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड बाजारों में विभिन्न उत्पाद अंतर्निहित परिसंपत्ति के रूप में सूचकांकों पर आधारित होते हैं। 2.3 Types of stock market indices. Indices can be designed and constructed in various ways. Depending upon their methodology, they can be classified as under market capitalization weighted index. In this method of calculation, each stock is given a weight according to its market capitalization. So higher the market capitalization of a constituent, higher is its weight in the index. Market capitalization is the market value of a company, calculated by multiplying the total number of shares outstanding to its current market price. For example, ABC company with 5,000,000 shares outstanding and a share price of 120 rupees per share will have market capitalization of 5,000,000 x 120 equals 6 rupees 0,000,000,000 i.e. 600 crores. Let us understand the concept with the help of an example. There are 5 stocks in an index. Base value of the index is set to 100 on the start date, which is January 1st, 1995. Calculate the current value of index based on following information. The market capitalization of the index on January 1st, 1995 is 18,800 rupees, which is the sum of the market price multiplied by the quantity of shares for each stock in the index. With the change in market prices, the market capitalization of these stocks increased from 18,800 lakh rupees to 42,500 lakh rupees.
The market capitalization on January 1, 1995 is equated to 100. Hence, the new value of the index is calculated as 42,500 lakhs/18,800 lakhs asterisk 100, which works out to 226.06. Since the index has risen from a base of 100 to a new value of 226.06, the change in the index value is 126.06%. Popular indices in India, Sensex and Nifty, were earlier designed on market capitalization weighted method. Let's understand in Hindi. 1 जनवरी 1995 को सूचकांक का बाजार पूंजीकरण रूप 18,800 जो सूचकांक में प्रत्येक स्टॉक के लिए शेयरों की मात्रा से गुणा किए गए बाजार मूल्य का योग है। बाजार कीमतों में बदलाव के साथ इन शेयरों का बाजार पूंजीकरण 18,800 लाख रुपये से बढ़कर 42,500 लाख रुपये हो जाता है। 1 जनवरी 1995 को बाजार पूंजीकरण 100 के बराबर था। इसलिए सूचकांक का नया मूल्य 42,500 लाख/18,800 लाख * 100 के रूप में गणना की जाती है, जो 226.06 पर काम करता है। चूंकि सूचकांक 100 के आधार से बढ़कर 226.06 के नए मूल्य पर पहुंच गया है, सूचकांक मूल्य में परिवर्तन 126.06% है। भारत में लोकप्रिय सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी पहले बाजार पूंजीकरण भारित पद्धति पर डिजाइन किए गए थे। Free Float Market Capitalization Index. In various businesses, equity holding is divided differently among various stakeholders. Promoters, institutions, corporates, individuals, etc. The market has started to segregate this on the basis of what is readily available for trading and what is not. The one available for immediate trading is categorized as free float. And if we compute the index based on weights of each security based on free float market cap, it is called free float market capitalization index. A majority of the stock indices globally, over a period of time, have moved to free float basis, including the Indian equity indices Sensex, Nifty and SX40. Price-weighted index. This is a stock index in which each stock influences the index in proportion to its price. Stocks with a higher price will be given more weight and therefore will have a greater influence over the performance of the index. The formula for calculating the value of a price-weighted index is as follows. Price index equals sum of the prices of all stocks included in index/no of stocks in index. Hence, the price index on January 1, 1995 equals 150 plus 300 plus 450 plus 100 plus 250/5 equals 250. The current value of the index is the sum of the current prices of all stocks included in the index divided by the number of stocks. The current value of the index equals 650 plus 450 plus 600 plus 350 plus 500/5 equals 510. Thus, the increase in the value of the index is 510. 250/250, i.e. 104%. This can be verified as follows. Dow Jones Industrial Average and Nikkei 225 are popular price-weighted indices. Let's understand in Hindi. मूल्य भारित सूचकांक के मूल्य की गणना करने का सूत्र इस प्रकार है। मूल्य सूचकांक इक्वल्स सूचकांक में शामिल सभी शेयरों की कीमतों का योग / सूचकांक में शेयरों की संख्या। 1 जनवरी 1995 को मूल्य सूचकांक इक्वल्स 150, 300, 450, 100, 250/5 इक्वल्स 250। सूचकांक का वर्तमान मूल्य इसमें शामिल सभी शेयरों की मौजूदा कीमतों का योग है। सूचकांक को स्टॉक की संख्या से विभाजित किया जाता है। सूचकांक का वर्तमान मूल्य इक्वल्स 650, 450, 600, 350, 500/5 इक्वल्स 510। इस प्रकार सूचकांक के मूल्य में वृद्धि 510 है। 250/250 यानी 104%। इसे इस प्रकार सत्यापित किया जा सकता है।
डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और निक्केई 225 लोकप्रिय मूल्य भारित सूचकांक हैं। Equal weighted index. An equal weighted index is one in which all stocks included in the index have the same weightage. The number of shares of each stock is adjusted in such a way that the weight of each stock in the index is the same. Subsequently, if there is any change in the market price of each stock, the weight of each stock will change. To maintain the same equal weights as earlier, the fund manager needs to sell those stocks that have increased in price and buy the stocks that have fallen in price. Consider an index constructed on January 1, 1995 with 4 stocks. The number of shares of each stock is adjusted in such a manner that the value of all stocks in the index is equal. Thus, each stock has the same weight in the index. With the change in the stock prices, the current value of the stocks in the index has changed from 120,000 to 146,000. If the old index value is equated to 100, the new index value will be 146,000/12000*100, i.e. 121.67. As can be seen from the last column in the above table, this is simply the percentage change in the stock price multiplied by the original weight of each stock, which equals to a rise of 21.67%. With the changed prices, stock P and stock R have a weight greater than 25%, while stock Q and stock S have a weight lower than 25%. The fund manager will then have to rebalance the index to restore equal weights. This can be done by selling appropriate quantities of stocks P and R and buying required quantities of stocks Q and S. Let's understand in Hindi. समान भारित सूचकांक। एक समान भारित सूचकांक वह होता है जिसमें सूचकांक में शामिल सभी स्टॉक समान होते हैं। महत्व: प्रत्येक स्टॉक के शेयरों की संख्या को इस तरह से समायोजित किया जाता है कि वजन सूचकांक में प्रत्येक स्टॉक का मूल्य समान है। इसके बाद अगर बाजार में कोई बदलाव होता है, प्रत्येक स्टॉक की कीमत, प्रत्येक स्टॉक का वजन बदल जाएगा। उसी को बराबर बनाए रखना है। पहले की तरह फंड मैनेजर को उन शेयरों को बेचने की जरूरत है जिनमें वृद्धि हुई है मूल्य, और उन शेयरों को खरीदे जिनकी कीमत में गिरावट आई है। 1 जनवरी 1995 को 4 शेयरों के साथ निर्मित एक सूचकांक पर विचार करें। के शेयरों की संख्या। प्रत्येक स्टॉक को इस तरह से समायोजित किया जाता है कि सूचकांक में सभी स्टॉक का मूल्य बराबर हो। इस प्रकार प्रत्येक स्टॉक का सूचकांक में समान भार होता है। स्टॉक की कीमतों में बदलाव के साथ सूचकांक में शेयरों का वर्तमान मूल्य 120,000 से 146,000 में बदल गया है। अगर पुराना सूचकांक मान 100 के बराबर है, नया सूचकांक मूल्य 1,46,000/120,000*100 होगा, अर्थात 121.67। जैसा कि उपरोक्त तालिका के अंतिम कॉलम से देखा जा सकता है, ये बस यही है। स्टॉक मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन को प्रत्येक स्टॉक के मूल वजन से गुणा किया जाता है, जो 21.67% की वृद्धि के बराबर है। बदली हुई कीमतों के साथ स्टॉक पी और स्टॉक आर का वजन स्टॉक के दौरान 25% से अधिक है। क्यू और स्टॉक एस का वजन 25% से कम है। फिर फंड मैनेजर को ऐसा करना होगा। समान भार बहाल करने के लिए सूचकांक को पुनर्संतुलित करें। यह उपयुक्त बेचकर किया जा सकता है। स्टॉक पी और आर की मात्रा और स्टॉक क्यू और एस की आवश्यक मात्रा खरीदना।